السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, by the grace of Allah Subhanahu wa Ta'ala, we are sitting together at this time to understand the beautiful language of the beautiful book of Allah Subhanahu wa Ta'ala. May Allah help us to understand it and may Allah accept it from us. Ameen Ya Rabbil Alameen. Alhamdulillah, we are done with past tense, fi'l madi, and I have introduced in the previous class passive tense of fi'l madi. Madi maruf and madi majhul in Arabic terms, right? Active tense is called maruf because the subject is known, and majhul comes from jahal, right? Jahal, that means jahalat, ignorance, or the absence of knowledge is called jahal. So because the subject is unknown, we don't have knowledge of subject in the passive tenses. That's why it is in Arabic called majhul. Okay, so anyways, we had done in the previous class Madi Majhul. Today we are starting the next verb, that is Fele Mudare, right? And I've told you that Fele Mudare will serve as present and future both. So let's see the table for Fele Mudare first of all. um, when we did Fele Madi, I told you that that's the basic, you know, uh, three-letter word. The first verb of Fi'l Madi is pure, original, without any change, right? Fa'ala, right? Only three letters without any change, the original form. And even if you go to the second for dual, it is fa'ala, one alif is added, or sometimes waw noon as it, sometimes ta is added, sukoon, dhamma, right? Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Every other verb, like every other word of the different pronouns, they are there, something has been added. But the first, yani singular third person masculine, is the original three-letter word. Okay. Okay, so fa'ala, we take it as pattern, and from here only we will make fi'l mudare. So fi'l mudare, there is a sign of fi'l mudare, that is we learn it with either a tan, right? A tan. This is these four letters. Yani, what are the four letters? Alif, ta, ya, noon. These four letters are the sign of fi'l mudari. If these four letters are coming, any of them is coming before the original letter of verb, it is for sure fi'l mudari. Number one. Number two, to change into different pronouns, there will be something added in the end also, right? In fi'l madi, if you remember, the changes were coming only in the end, by the end of the word, right? Like fa'ala, so fa'ala, one alif is added here, fa'alu, waw is added, fa'alat, fa'alata, whatever. The beginning was exactly same, fa'ala, right? Fa, ain, lam was exactly same. In the end, we were adding because the मादी means the verb has been ended, action has been ended. ठीक है ना? मादी में जैसे end हो गया ना काम का, तो उसी तरह end पे ही उसके changes आएंगे. Just giving a clue to remember. But فعل मुदारे will have
sign these any of these four letter in the beginning and some changes in the end also, right? So you can say, I told you then you can remember like this, teen, उर्दू में तीन, ता या नून तीन ही होता है ना। और फिर ये देखें एक की तरह ये लिखा हुआ है, तो तीन और एक चार, तो ये चार लेटर हैं, ठीक, जो आपने याद रखने हैं फेले मुदारे के लिए। ओके, सो here what is added, देखिए फा आइन लाम, this is the root letter, और या is added in the beginning. So what is the format we can observe? Ya has a fatha in the beginning and the first letter, yani fa kalima, becomes silent with sukoon. And then last letter becomes with dhamma. It takes dhamma, halate rafa, right? So fi'le madi, if we say fi'le madi is always in halate nasab, है ना, fa'ala, yani basically fa'ala. La, fatha is a sign of nasab. But fi'l mudari is in halate rafa. ठीक है? Because the last letter of fi'l mudari will take a dhamma. So fa'ala से fi'l mudari क्या बनेगा? यफ़अलु. ठीक है? fa'ala से यफ़अलु. fa kalima becomes silent with sukoon. Yaf, not fa fi fu, yaf only with the sukoon, and then lam with dhamma. Now here you can see three harakats, yani u, a, e. Ain, it means that the second kalima, ain kalima may take dhamma, fatha and kasra. Remember I told you in Fi'l Madi also, this is fa'ala. Majority of the words come on this pattern, but it could be fa'ila and it could be fa'ula. All these three pronunciations are possible, right? There is no change in the meaning. It is just different words have different pronunciation. Some will come on the pattern of fa'ala, some fa'ila, some fa'ula, right? These are different three possible patterns of fi'l madi. Either fa'ala or fa'ila or fa'ula. Changes are coming on ayn kalima. Similarly, exactly for fi'l mudari also, either it will be yaf'alu or yaf'ilu or yaf'ulu, right? So ya and dhamma in the end will be exactly same. Changes will occur on ayn kalima, like in fi'l madi, right? So this is the beginning things you need to understand clearly. So we can say, for example, we take the easy one pattern like yaf'alu, fa'ala, yaf'alu. So yaf'alu, then yaf'alani. I'll just open another book, just a minute. Here it is very clear, like with different colors. So this is in Urdu, but I'm just opening this for convenience. The table will be exactly same, like English and Urdu. Now they are different because in Urdu we read from right to left, okay? But I think it will not confuse you, right? So you just learn the sequence. It is yaf'alu, yaf'alani, ani. We add alif noon in the end. يفعلون واو noon in the end for jama, for plural. Tasniya or musanna for two, pair, and wahid for a singular, right? So here this, so you can see everywhere all these, just ignore these number 1 2 3 4 5 6, ignore them, right? You just focus as per our normal sequence that we first do third person. Ghaib means third person, second person and first person, and then male and female, masculine and feminine, and then singular, dual, plural, right? You know the pattern very well from fi'l madi. So yaf'alu, yaf'alani, everywhere this ya or ta or here alif and here noon. Four letters I told you na? Alif, ta, ya, noon, atan. So just combined name is atan. Otherwise it doesn't have any meaning. Okay. So what I was telling you, that you see all the words, either it has a ya or a ta or alif
or noon in the beginning. So mutakallim has alif, af'alu, plural and dual has naf'alu, noon in the beginning. So alif and noon only come one time. Af'alu, alif comes one time. Naf'alu, noon comes one time, right? The rest 12 verbs have either ya or ta. Okay, and if you notice, third person, a majority has ya, like yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. So we can say ya is a symbol of he or they, right? Because it's third person. But mu'annas, she, yani, because mu'annas singular third person is she. The verb, sorry, the pronoun hidden is she. And I just remember it like that, that she is very naughty. She is very naughty because normally ya should come for third person. For ghaib, for third person, ya should come. Yafalu, yafalani, yafaluna. But she has taken ta, right? Out of the way she went and she has taken a ta. So it becomes tafa'alu. And then her friend is also with her. Both of these girls also take ta. Tafa'alani, right? But when they all together, then they are fixed. Yaf'alna. So ya in the beginning is a sign of a third person. Okay, you see here in these all three, ya is there, and masculine plural also ya is there. Only she and her friend, they are very naughty, right? She and her one friend. So for singular uh, third person and dual third person feminine, they take ta. Otherwise, all are taking ya. And in the end, this is u sound, yafalu, and ani and una. And tasniya for male and female are exactly same, just ta and ya difference is there. Tafalu, tafalani, yaf'alna, yaf'alna. You remember فعل ماضي was also like that. فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا, right? فعلنا فعل ماضي also, and here also يفعلنا, kind of similar they sound فعل ماضي and مضارع for feminine plurals. Now for second person يعني حاضر تفعل, like if you look at this line, this row, يفعل يفعلان يفعلون for third person, uh, and the same line is repeated only with the ta in the beginning. Here was يفعل يفعلان يفعلون, but here it's تفعل تفعلان تفعلون. Exactly same, just ya and ta are replaced. Ya for third person, ta for second person. Ta matlab tum, you do or you will do. You both will do. You all will do, or you do or you will do, like, because it serves as present and future both. So I hope it's clear now. Third person male and female, sorry, third person male and second person male are very similar, just ta and ya difference is there. Okay, for female, a third person, it was tafa'alu, but now it becomes tafa'alina, third person. So if I'm, sorry, second person. If I'm talking to one girl directly, so I will say tafa'alina, you do. One singular girl, I say tafa'alina, right? And then if there are two girls, taf'alani, and if there are all girls, taf'alna. So here you see, yaf'alna, they all girls will do, and taf'alna, you all will do. Ta stands for tum. Okay, ये देखें सब, all these second person verbs have a ta in the beginning. تفعل تفعلان تفعلون تفعلين تفعلان تفعلنا. तो अगर आप इनको कंपेयर करें, यफअलूना तफअलूना, ता या का डिफरेंस है मेल्स मैस्कुलिन के लिए प्लूरल में, और यफअलना तफअलना एग्जैक्टली सेम, ओनली ता या का डिफरेंस है. ठीक है, या फॉर थर्ड पर्सन, ता फॉर सेकंड पर्सन. And then af'alu, I do or I will do. Naf'alu, we do or we will do. Okay? And here you, if you further notice the color code,
green color is used where only فعل مضارع's alamat is there. The sign of فعل مضارع is in the beginning. In the end, there is no addition, right? So what are those? यानी यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु जिसको उन्होंने सीक्वेंस में कर दिया कि 1 2 3 4 5. These five are only an addition in the beginning for فعل مضارع. فعل مضارع का sign in the beginning. In the end, there is no change. ठीक है ना, नो एडिशन इन द एंड. तो उसको उन्होंने ग्रीन कलर में लिख दिया है. यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु. अच्छा, वन थिंग यू विल नोटिस कि थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर एंड सेकंड पर्सन मैस्कुलिन, sorry, third person feminine singular and second person masculine singular are exactly same. Tafalu, exactly same, right? So you may ask, how will we understand it is third person feminine or second person masculine? So my dear, don't worry. When we practice, you will come to know. Okay, inshallah. Because it if you know I'm talking to some yani the one who is talking to some male, so that he will use na कि you do it, so tafalu he will use. But when we are talking about a third person, it will be tafalu for female, right? So inshallah we will be able to make it. Don't worry for that. Okay, so I told you that green color they have used for the verbs which are only with pele mudare sign in the beginning but no addition in the end. The blue color is used when there is an addition in the end also, like ani, ona sound, right? And this black is used for feminine plurals, either second person or third person, okay? Because they are very special cases. These two are very, very, very special cases. I'll tell you in some other class, in the next class, okay? But abhi, my concern is to introduce this fi'l mudare to you, right? The how it is formed. Whatever I explained you till now, is that all clear? If it is clear, you can give me thumbs up or you can write in the chat. Or if you have any question, you can ask me. Okay. Okay, great. Okay, so as I said, fi'l mudare may have another pattern that will be yani change letter yani haraka change on ain kalima, right? Either it could be yaf'alu or it could be yaf'ilu, right? Some verbs may come on this pattern yaf'ilu. Okay, so yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna, taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. All together it goes same way. Okay, so no need but for practicing, for learning by heart, this is clear. This is easy. Yaf'alu, yaf'alani, right? So you will learn from here. In the assignment, I'll give you some 2 3 verbs. And you can select anyone because we have next class tomorrow. So, but in the morning, tomorrow in the morning, you will practice writing one fi'l mudare table by yourself. I'll give you 2 3 verbs and you will write with one. This is third pattern, yaf'ulu. Okay, yaf'ulu. Meaning doesn't change. This is just a different format, different pattern, different scale of verbs. Okay. Okay. So because it's a crash course, so I would like to introduce one more topic to you. Shall we go ahead? Are you able to understand? Because the Fele Mudari's table is new today. So shall we go with one more topic? Okay. Okay, great, inshallah. Okay, my dear. So now I'll introduce abwab to you, the 6 abwab, because I told you, just let me, hmm. This I want to introduce to you today. Abwab Thulathi Mujarrad. What does it mean?
as I said, every verb will have the base in fi'l madi. Fi'l madi, first verb will be pure original verb, and then all other verbs are made from that fi'l madi. Okay, one thing. The other thing, uh, it has maximum 3 patterns. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Okay, these are the maximum 3 scales where we see the verbs are made. Okay, the verbs have their pronunciation on either fa'ala, fa'ila, fa'ula, as I said in the beginning also today. Okay, now from فعل ماضي, فعل مضارع is formed, right? So, يفعل, يفعل, يفعل. These are the 3 maximum pattern for فعل مضارع, right? But it is not a rule that if it is فعل in فعل ماضي, it will be يفعل in فعل مضارع. Same verb. ठीक है, and if it is fa'ila in fi'l madi, तो definitely in fi'l mudari it will be yaf'ilu. No, it is not necessary. It may come, it may not come. ठीक है, so uh, 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 there may be different haraka on ayn kalima in fi'l madi, and for the same verb in fi'l mudari it is a different haraka. ठीक है, but on the basis of these, the people who have written the rules of grammar, they have divided all possible cases into 6 cases. Those 6 cases are called the ابواب of ثلاثى مجرد. I told you what does ثلاثى مجرد mean when we were doing فعل ماضي in the beginning, right? So ثلاثي comes from ثلاثة. ثلاثة means 3, and مجرد yani only 3 letters, triliteral verbs, right? So only 3 letters. In that we have 6 different forms. Okay, what are those? Uh, fa, uh, for example, fatahat. It means he opened, right? This is a word fataha on the pattern of fa'ala, right? Fa'ala. So its mudare is yaftahu, yani yaf'alu के pattern पे. तो fa'ala yaf'alu, ये एक pattern हो गया कि फ़ेले मादी में भी आइन कलिमा पे फतहा है, तो फ़ेले मुदारे में भी आइन कलिमा पर फतहा ही है. ठीक है, this is one case, this is one possibility. अच्छा, एक और possibility है कि फ़ेले मादी में तो आइन कलिमा फतहा के साथ है, बट फेले मुदारे में सेम वर्ब फेले मुदारे में कसरा के साथ है आइन कलिमा पर. ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ضرب बट यضرब नहीं है. देयर इज नो वर्ड यضرब. ضرب यضرب, इट इज ऑलवेज लाइक दैट. तो जो भी लाइक यू नो, there are some verbs who come on this pattern के फ़ेल मादी में they take fatha but they take kasra in फ़ेल मुदारे. ठीक है, तो there are few verbs like that. ضرب يضرب, صبر يصبر, ظلم يظلم, عرف يعرف. ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना डिफरेंस कि आइन कलिमा पे यहाँ तो फतहा है, ठीक है, सारों में, बट यहाँ पे सब में कसरा है. सो दे ये एक और पैटर्न हो गया कि ضرب يضرب यानी फ़ाल है लेकिन ये यफ़इलु है. ठीक है, उन्हीं वर्ब्स का. ओके, थर्ड पॉसिबल केस इज कि फ़ेल मादी में तो फतहा है नसरा. ठीक है, यानी वही फ़ाला पैटर्न, बट इन फ़ेल मुदारे इट टेक्स अ दम्मा. नसरा यंसुरु. ठीक है, and there is no word yansaru, yansiru. No, there is no word. That is not the pronunciation of this verb. This verb always comes nasara yansiru, yansuru, sorry. ठीक है, yansuru. So there are few verbs that come on this pattern कि फ़ेल मादी में वो फ़ाला का पैटर्न ही है, बट फ़ेल मुदारे में फ़ाऊला, फ़ाऊलू, सॉरी यफ़उलू का पैटर्न है. ठीक है, यफ़उलू, फ़ाला यफ़उलू.
ठीक, हशरा यहशुरु, सजदा यसजुदु, शकरा यशकुरु, like this. ठीक है, it keeps going. So total we have studied 3 cases. Fourth case, तो उन्होंने मतलब जो 3 केसेस हमने पढ़े हैं ना, उन्होंने अच्छा, तो पहला जो भी वर्ब वहां लिखा हुआ था, उन्होंने उसको उस बाब का नाम दे दिया है। ठीक है, लाइक वो पूरा ग्रुप, इन अरेबिक और उर्दू वी आर कॉलिंग देम बाब और अबवाब, बट इन इंग्लिश वी कॉल देम फैमिली, और सम बुक्स विल कॉल देम फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लाइक दैट, ओके। एंड सम बुक्स विल राइट इट फर्स्ट फैमिली, सेकंड फैमिली, थर्ड फैमिली। ठीक है, तो उसको एक फैमिली कह देते हैं, कि इस तरह से आते हैं। ठीक है, कि फातहा है तो यफ्ताहु, उसका फेले मुदारे आएगा, तो ये एक फैमिली है, कि जितने भी वर्ब इस पैटर्न पे आते हैं वो एक फैमिली हो गई। ठीक है, तो ये एक फैमिली है, फातहा फैमिली, इसको क्या कहेंगे? फातहा फैमिली, या बाब फतहा। ठीक है, और जब somebody will say कि फतहा फैमिली, what do you understand by that? You will understand कि फतहा, तो इसका जो पहले मुदारे बनेगा ना, वो भी यफ्तहु, वो भी फतहा के साथ ही बनेगा, ये मतलब होगा उसका, बस। ठीक है, अच्छा, तो ये फैमिलीज बन जाती हैं हर एक पैटर्न से। तो अभी एक फैमिली क्या बन गई? फतहा, तो उसका हमें पता है कि वो फेल मुदारे में भी फतहा लेता है, यफ्तहु। दूसरी फैमिली क्या है? दरब, तो हमें पता है कि अच्छा, ये इसका जो फेल मुदारे है ना, वो कसरा लेता है, यदरिबु। तीसरी फैमिली बन गई नसरा, तो हमें पता है कि वो दम्मा लेता है, यंसुरु। ठीक है, ये 3 फैमिलीज बन गई हैं। एंड यू नोटिस कि यहाँ तीनों में फेल मादी हैज अ फतहा फतहा फतहा, बट फेल मुदारे हैज फतहा, कसरा, वम्मा। ठीक है, क्लियर? क्लियर टिल हियर, माय डियर लर्नर्स? मैम एक क्वेश्चन है प्लीज। जी जी। मैम ये बताएं कि जैसे आप हर वर्ड की गर्दान बताती हैं ना, तो हम्म। जैसे अब यहाँ पे फतहा है, यफ्तहू है, तो इन 6 वर्ड्स की बस ये इतनी नहीं ही हैं जितने सामने नहीं नजर आ रहे हैं, या? नहीं 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 शिफा, देखो मैं कह रही हूँ कि ये एक फैमिली है। देखो, ठीक है। यानी वर्ड्स, क्योंकि अरेबिक जैसे अरब्स बोलते हैं ना, हमने ज़ाहिर है उसको उसी पे भी हमने रूल्स बनाने हैं। ठीक है, और आपको पता है ये हम्म। अरेबिक के सारे रूल्स नॉन अरब्स ने बनाए हुए हैं, अरब्स को तो जरूरत ही जी। नहीं है। ठीक है, तो कुछ हम्म। वर्ड्स शिफा फेले मादी में इस तरह बोले जाते हैं, लेकिन फेले मुदारे में इस तरह बोले जाते हैं। सेम समझ गई। सेम ठीक वर्ब है। है, तो फेले मादी में ऐसे बोला जाता है, फेले मुदारे में ऐसे। ठीक है, जैसे दौराबा है, तो फेले मादी में जी। दौराबा बोला जाता है, बट फेले मुदारे में यदरिबु बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक जी। पैटर्न है। इस पैटर्न पे कुछ वर्ब्स हैं, अभी हम आगे देखेंगे। मैंने भी बल्कि पीछे दिखाया ना कि ये सारे जो हैं, जैसे देखो, जैसे ये सारे दौराबा हम्म। यदरिबु, तो इनकी टेबल तो बिल्कुल वैसे ही चलेगी शिफा। ठीक है, दौराबा दौराबा दौराबू, यानी फेले मादी में बिल्कुल हम्म। वैसे ही चलेगी जैसे नॉर्मल चलती है, और फेले मुदारे समझ में भी गई। जैसे नॉर्मल चलती है वैसे ही चलेगी। यदरिबू यदरिबानी यदरिबूना तदरिबू हम्म। तदरिबानी तदरिबना, ऐसे। ठीक है, जी जी, यदरिबना। समझ गई। तो मतलब ये सिर्फ पैटर्न है। और व्हेन हम्म। यू विल सी द डिक्शनरी शिफा, अरेबिक डिक्शनरी, जी जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम इंग्लिश डिक्शनरी हमें कितनी दफा कंसल्ट करनी पड़ती है ना, कि नहीं, वोकैबुलरी जी के लिए ना, डिफरेंट नाउन प्रोनाउन के देखने के लिए। यानी जब जी। जो इंग्लिश बिगिनर्स होते हैं ना, उनको डेफिनेटली डिक्शनरी कंसल्ट करनी पड़ती है। तो इसी तरह हम्म। आपको अरेबिक डिक्शनरी, व्हेन यू विल बी अ स्टूडेंट ऑफ अरेबिक, यू विल हैव टू कंसल्ट अरेबिक डिक्शनरी। ठीक है, तो जब आप जी। अरेबिक डिक्शनरी कंसल्ट करेंगी ना हम्म। किसी भी वर्ब के लिए, तो उन्होंने क्या दिया होगा? उन्होंने फॉर एग्जाम्पल, आप ना इसको ढूंढना चाह रही हैं कि इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आइन रा फा, आप रूट वर्ड देखेंगी, और ना उन्होंने उन्होंने ना ब्रैकेट में लिखा होगा, यानी आइन रा फा, ऐसे वो बताएंगे कि अच्छा ये वाला रूट लेटर जो है। ठीक है, और ना ब्रैकेट में उन्होंने यहाँ पर ऐसे एक ना लिखा होगा दौद, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, बस। जी। अब इसका क्या मतलब है? कि ये दोराबा फैमिली से है। ठीक है, और हम्म। दोराबा फैमिली से जब आपको ये पता चल गया ना कि अच्छा दोराबा फैमिली से है, तो इसका मतलब है आपने इसको कैसे पढ़ना है। आपने पढ़ना है हम्म। आराफा, आपने दोराबा के हम्म। पैटर्न पे पढ़ना है इसको, ये पता चलेगा आपको। ठीक है, और दूसरी बात जी। आपको ये पता चलेगी कि इसका अगर फेले मुदारे बनाना है ना आपने, तो आपने बनाना है या अरीफू, उसको कसरा के साथ बनाना है, क्योंकि यह हम्म। दरीबू है। तो हम हर मतलब फैमिली का जो पहला पहला वर्ड है ना, इसी के नाम से वो फैमिली का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम हम्म। कहेंगे दौराबा फैमिली, आप फौरन कहेंगे अच्छा साबारा वालामा, यानी उस पैटर्न पे पढ़ना है उसको।
ये फैमिली के नाम है। तो हमें इसका फेले मादी का भी पैटर्न पता चल जाता है कि किस तरह पढ़ना है, और फेले मुदारे भी पता चल जाता है कि किस तरह पढ़ना है। दोराबा फैमिली है तो आपने इसके फेले मुदारे में कसरा लगा के पढ़ना है हमेशा, डिफरेंट वर्ब्स उसके अंदर आ सकते हैं। जी, तो ये सिर्फ समझ गई मैम। प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, नथिंग एल्स। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक। आमीन भैया की बारकल्लाह फीक। अच्छा, तो ये 3 फैमिलीज बन गई अभी तक हमारे पास, ठीक है। फातहा यफ्तहु फैमिली, ضرب यضرब, बल्कि फातहा फैमिली कहेंगे सिर्फ, ضرب फैमिली कहेंगे, नौसरा फैमिली कहेंगे। और ये ना याद हमें करने पड़ेंगे सिर्फ एक एक वर्ड। तो जब हम फैमिली कह देंगे, जब हम कहेंगे फातहा फैमिली, तो आपको ये याद होना चाहिए कि फातहा का फेले मुदारे कैसे बनता है, यफ्तहु बनता है। ये बस आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी फिर उस पैटर्न पे हम बाकी सारे अल्फाज खुद ही बना लेंगे। तो ये 3 हमारे फैमिलीज बन गए, ठीक है, 3 अबवाब बन गए या फैमिलीज बन गए। अच्छा, अब हम चौथे की तरफ चल रहे हैं। टोटल 6 है ना, मैंने आपको बताया देयर आर 6 फैमिलीज, ठीक है। तो फोर्थ फैमिली क्या है, कि फेले मादी में सेकेंड लेटर आइन कलिमा हैज अ कसरा, ठीक है। ये ऊपर 3 फैमिलीज कौन सी थी, कि फेले मादी हैज अ फतहा फतहा फतहा, ठीक है, डिफरेंट फैमिलीज हैं बट सब में फतहा है। अब यहाँ पे फेले मादी में कसरा वाली फैमिली आ गई है, ठीक है, समिया, लेकिन इसके फेले मुदारे में फतहा है, यस्माउ, सामिया यस्माउ, ये फैमिली है, ठीक है। तो अब मैं कहूंगी कि आइन लाम मीम रूट वर्ड है, लेकिन वो सामिया फैमिली से है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा उसको कैसे पढ़ना है, उसको आलामा नहीं पढ़ना आपने, सामिया फैमिली से है तो आप उसको उस आलिमा पढ़ेंगी, लाम के नीचे कसरा लगा के पढ़ेंगी सेकंड लेटर के नीचे, ठीक है। तो अच्छा, एक तो ये हो गया, और फिर उसका जो फेल मुदारे बनेगा वो बनेगा ये आलम, वो फतहा के साथ पढ़ेंगे आप। आपको पता चल जाएगा फैमिली से, आपको पता चल जाएगा उसको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो आलिमा या आलम, ये तो कुरान पाक में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये दोनों वर्ड, बल्कि आमिला या अमलू, या अमलूना तामलूना, है ना, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और बिल्कुल बड़े लेटर भी सेम ही है, आइन लाम मीम, बट आइन मीम लाम, ठीक है, और दोनों उसी फैमिली से हैं। आलिमा या आलमू, आमिला या अमलू, ठीक। आलिमा ही न्यू, उसने जान लिया, या आलमू ही नोज, आमिला ही डिड, कोई भी अमल किया उसने, एंड या अमलू ही डज, वो करता है, ठीक हो गया। अच्छा, तो हाँ, ये एक फैमिली हो गई सामिया फैमिली, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ फैमिली, नाउ वी आर मूविंग टू फिफ्थ फैमिली, दैट इज, ये जैसे यहाँ पर सामिया कसरा के साथ है ना फेले मादी में, यहाँ पे भी फेले मादी में कसरा ही है, हासिबा। लेकिन यहाँ इस फैमिली में क्या था कि फेले मुदारे फतहा के साथ था, बट यहाँ फेले मुदारे भी कसरा के साथ है, यानी दोनों कसरा कसरा वाले। ये एक नई फैमिली है, ठीक है। हसीबा यहसिबु, वरिसा यौरिसु, वसिqa यौसिqु, ठीक, कसरा कसरा आइन कलिमा पर। तो इस बाब का नाम क्या हो गया, हसीबा बाब, हसीबा फैमिली, ठीक हो गया। अच्छा, ये देखें, दो फैमिलीज इस तरह से उन्होंने लिख दी, सामिया यस्माउ फैमिली और हसीबा यहसिबु फैमिली। ओके, लास्ट फैमिली, सिक्स्थ एंड लास्ट फैमिली, कारुमा यकरुमु, ये क्या है, फाउला यफउलु के पैटर्न पे, ठीक है। यानी का यहाँ पे भी दम्मा है और यहाँ पर भी दम्मा है। दिस इज द लास्ट फैमिली के दोनों में फेले मादी मुदारे दोनों में दम्मा। और ये सबसे कम वर्ब्स इस पैटर्न पे आते हैं, इस फैमिली से बहुत ही कम वर्ब्स हैं, ठीक है। कारुमा यकरुमु, हसुना यहसुनु, दअफा यअब, यदउफु, अबुदा यअबुदु, करुबा यक़रुबु, ठीक है। अच्छा, तो ऑल टुगेदर दिस इज द टेबल ऑफ ऑल दोज 6 फैमिलीज, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने नाम लिख दिए, ऑल 6 फैमिलीज के नाम लिख दिए हैं, या बाब के नाम लिख दिए हैं। वही जो पहला पहला वर्ब था ना, उसी को उन्होंने फैमिली का नाम दे दिया। और उसकी जो मैंने आपको बताया कि डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे तो आपको खाली फा लिखा नजर आए अगर, तो इसका मतलब है फातहा फैमिली से है। दौद लिखा नजर आए तो मतलब दौराबा फैमिली से है। नून लिखा नजर आए तो मतलब नासरा फैमिली से है। सामिया सीन सामिया फैमिली से है। हा हासिबा फैमिली से है। एंड ख खरुमा फैमिली से है, राइट। ओके, और वजन क्या है इसका, पैटर्न क्या है, स्केल क्या है, पढ़ना कैसे है इसको।
फतह यफ्तहू हमने पढ़ लिया है, बस ये एक टेबल की तरह यहाँ पे हम याद कर लेंगे इसको। फतह है तो ओके, यफ्तहू। ضرب यضرب, नसर यंसुरु, यानी फेले मादी के फतह 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 वाले उन्होंने अलग से कर दिए, फिर कसरा कसरा वाले अलग से कर दिए, और फिर दम्मा वाला अलग से कर दिया। ठीक है, मतलब फतहा फेले मादी में, कसरा एंड दम्मा। ठीक है, वेयर वी कम ऑन द मुदारे साइड, तो इसके फतहा कसरा दम्मा। ठीक है, फतहा यानी फेले मुदारे में फतहा कसरा दम्मा, और फतहा कसरा वम्मा। ठीक है, लेकिन वो मतलब अलग फैमिली हो गया क्योंकि इधर जो है वो अलग है। आई होप इट्स क्लियर, मैंने आपको बता दिया, बस इसको थोड़ा सा इसको बस रट्टा लगाना है कि फैमिली, आपको फैमिली की प्रोनाउंसिएशन पता चल जाए। ठीक है, कि अगर सामिया है तो उसका फेले मुदारी आपको याद होना चाहिए कि यस्माउ है, बस ये इसको थोड़ा सा रट्टा लगाना है, ये इनके पैटर्न्स को। ठीक है, फतहा यफ्तहु, ضرب يضرب, नसर यंसुरु, समिअ यस्मअ, हसिब यहसिबु, करुम यकरुम। यानी अगर मैं फेले मादी बोलूं सामिया, तो आपको याद हो कि इसका यस्माउ है फेले मुदारे। ठीक है, चलें, बस आज के मेरे प्लान में इतना ही था करवाना। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? डज एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन? So here they had given the fi'l mudari exam. So two things we have done, देखें, यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना। ठीक है, जैसे यफउलु यफउलानी यफउलूना, राइट, तो वो पूरी। और यंसुरना तंसुरना, ये मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि ये बड़े स्पेशल हैं। I'll tell you tomorrow why they are special, inshallah. In the next class we'll discuss with them. जी, any question? I hope it's all clear, inshallah. So see you tomorrow then, inshallah, right? Um, okay, inshallah. Ameen wa iyaakum. ठीक है. So I'll assign you a homework. Please do take some time. One table of fi'l mudari I want you to write, and just go through to learn these six verbs, six abwab. ठीक है? Just these six. This is also यानी the table only they have given. ठीक है? कि अलामत मुदारे ता या अलिफ नून ता या, anyways you learn. और फिर उन्होंने इस तरह से टेबल लिखी हुई है। ठीक है, मतलब ये बताया हुआ है कि हियर आनी ऊना का इजाफा है। ठीक है, और बस गिरदान को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, चले, see you inshallah tomorrow. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.